Well, Sambhal and the violent clashes that took place over there vis-a-vis the mosque survey continues to be our top focus this news wheel as well, because the latest that's coming out of Sambhal in Uttar Pradesh looks like this. The case has also been registered against Samajwadi Party Member of Parliament Zia Rahman Barq and MLA Mehmood Iqbal's son Sohail Iqbal for allegedly conspiring and inciting violence. Officials said that those responsible for the violence that prevailed will be charged under the National Security Act, and as a precaution, the internet services across the district have been suspended for a day. Sambhal Superintendent of Police Krishna Kumar Bishnoi said that additional police personnel have been deployed to maintain law and order. He further stated that the alleged firing in which a police PRO was injured was done by a country-made weapon. Listen in to what the DM and the SP have to say. यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जिया और रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएँ, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पाँव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। In view of the violence, the district administration has issued a notice prohibiting citizens from buying or collecting stones. The notice issued by local SDM warns that strict action will be taken against anyone found violating this order. But of course, this issue is heavily being politicized as well. Next up on your screens is AIMIM Chief Asaduddin Owaisi and Union Minister representing the BJP, Giriraj Singh. वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है।
और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? मजाक बनाया गया, उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएम एसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिल्कुल सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? जो घटना हुई है, हमारे सांसद रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है। Meanwhile, tensions are rising over the Waqf Amendment Bill, with the opposition parties clashing with the ruling government, particularly over the Joint Parliamentary Committee, the JPC, overseeing the Waqf Amendment Bill. Now, opposition members of Parliament accuse JPC Chairman BJP's Jagdambika Pal of making unilateral decisions on meeting schedules, leading to protests and threats of the opposition members to completely dissociate from the committee altogether. And earlier, on the 5th of November, opposition MPs met with Lok Sabha Speaker Om Birla, urging his intervention for a fair process. They've now formally requested again an extension for the JPC to allow more time for the discussion. Now, take a look at this. What's happening on the other side? You've got Trinamool Congress that has fiercely opposed the bill yet again, calling it unconstitutional and harmful to minority rights. TMC leaders argue that the bill violates equality laws and undermines federalism. Here's, of course, Kalyan Banerjee of the TMC. हम लोग स्पीकर साहब का साथ भेंट किया है, हम लोग पहले भी भेंट किया। हम लोग का भावना जो था उन्होंने उनको बोला था, ये बुलडोज कर रहे हैं, जेपीसी का चेयरमैन बुलडोज कर रहा है, हम लोग को सुनता नहीं है, सबको सुनता नहीं है, और ये इतना जल्दी रिपोर्ट नहीं देने सकता है, तो ये रिपोर्ट फॉल्टी हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो स्पीकर साहब के सुनने के बाद बोला कि आप लोग को जो भावना है, वो भावना को हम लोग रिस्पेक्ट किया है, हाँ, तो टाइम उन्होंने बढ़ा देंगे। और जो स्टेट को बात नहीं सुना है, उन सब स्टेट को बात सुनेंगे, जो इंटरेस्ट स्टेक होल्डर है सबको बात सुनेंगे, उसका बात जो होगा। Meanwhile, in Kolkata, protests have erupted with Muslim groups condemning the amendments as an attack on their rights. On the other hand, you've got Maulana Arshad Madani, the president of Jamaat-e-Ulema-e-Hind, condemning the Prime Minister's recent remarks and statement that there is no place for Waqf law in the constitution, terming the remarks as frivolous. He also added that tomorrow it may be said that Muslims would not be allowed to offer namaz, go for Hajj pilgrimage and give away zakat, according to Maulana Arshad Madani. Moving on, Trinamool Congress's Member of Parliament, Kalyan Banerjee again, the chief whip in the Lok Sabha, said that the party chairperson, Mamata Banerjee, should be accepted as the leader of the opposition India bloc. Kalyan Banerjee asked the Congress to set aside its ego and recognize Mamata Banerjee as the leader of the India bloc. He also criticized the Congress for its poll debacle in Maharashtra. Kalyan Banerjee emphasized the need for unified and decisive leadership to challenge Prime Minister Narendra Modi and the BJP. He said, and I quote,
The Congress and other opposition parties should admit their failure. They should drop their ego and accept Mamata Banerjee as the leader of the India Alliance. And earlier, the Trinamool urged India Bloc for introspection on why Mamata Banerjee or Hemant Soren could defeat the BJP, but Congress failed, first in Haryana and now in Maharashtra. আগামী দিনে দেখবেন পশ্চিমবাংলায় কোনো বিরোধী দলনেতা হবে না, 30টা সিটও পাবে না। তবে এর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, যখন সারা ভারতবর্ষব্যাপী কংগ্রেস যখন পিছিয়ে পড়ছে, যারা অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিরোধী দল যখন পিছিয়ে পড়ছে, তখন তাদের ইগো ছেড়ে দিয়ে, তাদের সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে, তাদের মানে দলের অস্তিত্ব রেখে ইন্ডিয়া জোট হিসেবে, সমস্ত বিরোধী দলের জোট হিসেবে, জোটের নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে নিয়ে আসা উচিত এবং সামনে নিয়ে এসে ভারতবর্ষের বুকে সেই লড়াইটা লড়া উচিত। এটাতে কোনো ইগোর ফ্যাক্টর নয়। যারা ব্যর্থ হচ্ছেন তাদের তো স্বীকার করতে হবে তারা ব্যর্থ হচ্ছেন। Well, now, the pre-release event for Pushpa 2, The Rule, it took place in Chennai yesterday, generating immense excitement ahead of its December 5th release. Some of those visuals are on your screens. The event, hosted at the Leo Muthu Indoor Stadium, was attended by stars Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Sri Leela, director Nelson, Dilip Kumar, and producer Archana Kalapati. Highlights, of course, include the launch of the song Kisik, featuring Sri Leela's dance moves and Allu Arjun's emotional speech, where he also spoke in Tamil, connecting with the crowd. The film will release, of course, on 800 screens in the state of Tamil Nadu, with 3,500 shows planned for opening day, aiming to exceed the success of the first version. Pushpa 2, The Rule, set to release on the 5th of December. Well, shifting our focus to news coming in from one of our neighbors, Bangladesh, where the interim government is now going to be reviewing several power agreements made during the tenure of former Prime Minister Sheikh Hasina, including a controversial deal with the Adani Group. And this comes amid corruption allegations coinciding with recent indictments against the Adani Group chairman Gautam Adani in the United States for a bribery scheme involving Indian officials. A committee under the Bangladesh Power Ministry has been formed to assess 7 major energy contracts, including the Adani 1,234.4 megawatt coal-fired plant, which was developed to supply electricity to Bangladesh. However, the plant has faced payment disputes and regulatory challenges. Allegations suggest that these agreements were signed under corrupt conditions, and the committee has gathered evidence that could lead to reconsidering or even scrapping these contracts based on international arbitration laws. The committee is also seeking international legal assistance to ensure a thorough probe into the matter. The scrutiny intensifies following the United States' indictment of Adani, accused of orchestrating a $265 million bribery scheme for securing power supply deals. Although Adani denies the charges, the situation puts additional pressure on Bangladesh's government as it navigates its own energy agreements. The outcome of this review could have significant implications for Bangladesh's energy sector and its relationship with India nonetheless, potentially impacting electricity supply and raising concerns over governance and accountability in the energy procurement. Meanwhile, India took a resolute stand for the global south early on Sunday morning at the COP29 in Azerbaijan, challenging what it deemed an unfair process in adopting a new climate finance goal. Now, the new collective quantified goal, the NCQG, setting a target of $300 billion annually for developing countries by 2035, was gavelled in amid applause and celebration, but without India's input. India, the first to reject the decision, criticized the lack of inclusivity and called out the COP29 presidency and UN officials for undermining trust. Chandni Raina, a negotiator from India's finance ministry, expressed deep disappointment, saying, and I quote, "Trust is the basis for all actions. This incident shows a lack of collaboration on a global challenge that disproportionately affects the developing nations." I unquote. The decision also introduced the Baku to Belem roadmap to 1.3T, a plan to scale up climate finance to $1.3 trillion. Yet India argued that the $300 billion was an annual goal. It was inadequate and misaligned with the urgent needs of the global south.
Raina highlighted the betrayal of trust, stating ignoring parties from speaking does not behove the UNFCCC system. Collaboration and trust are fundamental, but both were disregarded today. And India's stance has since been endorsed by other developing nations, marking a significant pushback against what many see as inequitable system in addressing climate action responsibilities. And this moment has brought to light the growing divide between developed and developing nations in the fight against climate change. As we all know, COP meetings are held every year, and there are serious negotiations where the government's representatives are there and they discuss about what is climate change, how are we moving, and what needs to be done. Now, over a period of time, it has become very clear that we are making promises in terms of last year it was loss and damage fund and implementation of that. But then the money which is committed never comes on the table. So it's very clear, but the message or why the COP still remains very important is that the developed part of the world has reached certain stage of development in terms of greening their procedures as well. Like, for example, when we talk of cross-boundary carbon tax and other things, it is that the developed part has technology. They can adopt that. But that doesn't mean that the developing part of the world starts paying perhaps as taxation for their development. So what we are looking at, or the importance of COP, is that the governments are sitting over there. First of all, they need to appreciate what is going to become very important in years to come. What is it they are thinking? Because the changes are not made overnight. They talk about that this will be implemented from 26, 27, or in next 5 years. So therefore, the preparedness or governments understand what they should be doing. And the second important part is that as they have combined voice of developing countries, that then they say what they cannot implement and what they can implement. It's very clear that the kind of financing we require is not coming. And maybe it would be wrong on the part of developing nations even to accept that to some extent. But what is more important is let at least there be flow of technology. It's very clear, like if I talk at the international level, I don't think so. There are critics which say, which was 10 years back, that we all used to say, is climate change a real threat? But today we know, yes, it is a threat. And it's much the uglier than what IPC reports predicted. And therefore, we have to act in that direction. Now, the developed part of the world also has to realize that there is only one planet to live in. So let's not worry about IPRs. Let's not worry about, I developed the technology, so what I'm getting in return. They should be more towards, this is only one planet. Let me share, because if developing part of the world is not clean, I cannot be clean either. It's something like COVID, it's going to spread. So therefore, they have to be careful. When you say the money is not coming, who are the defaulters there? It's everyone. You look at the commitment which was made perhaps in every COP. It's not even 10%. Yes, we are spending money on the name of climate change, but maybe that's only to have meetings. It is not really saying that I'm going to give you soft loan. We are not asking for subsidy, but even the interest rates for the developing part of the world from international financing companies, it's much higher than what they give to the developed part of the world. So how do you expect where the capex is going to come from? So that the financing in that part also becomes important. Well, that was Vibha Dhawan, the Director General at TERI, the Resources and Energy Institute. Of course, going green, that's a great idea, but there's a cost to going green. Can you even afford it?